So hello everyone and welcome back to my channel. As you all know, currently I am focusing on Aptitude series of Assistant Loco Pilot examination. The series will be helpful for every individual, those who are preparing for any kind of competitive examination. This is the fourth video of the series and today we'll discuss about LCM and HCF, and it plays a vital role in the field of mathematics. So today we'll discuss some concept of your LCM and HCF और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेडली आने वाले कुछ सवाल भी हम डिस्कस करने वाले हैं. सो प्लीज बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. So first thing is, what is LCM? So LCM stands for least common multiple and sometimes it is also called as lowest common multiple, and in mathematics LCM of any two or more number that is evenly divisible by the given numbers. For example, let's say LCM of 5 and 6, this is your 30. It means 30 is divisible by 5 as well as by your 6. Similarly, LCM of 10 and 15 is your 30. It means 30 is divisible by 10 as well as by 15. मैं आपको बताने वाला हूं कुछ देर बाद कि ये LCM आप फाइंड आउट कैसे करोगे. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर LCM, यूजुअली हम दो तरीके बस अपनाते हैं. वन इज योर फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड इज योर कॉमन डिवीजन मेथड. सो फर्स्ट इज योर फैक्टराइजेशन मेथड. सो इन स्टेप 1, break every individual given number into a product of prime factors. Then in step 2, product of highest powers of all the factor is known as LCM of the given number. Let's take an example. So find the LCM of 980 and 540. आपको यहाँ पे दो नंबर दे दिया गया and you have to calculate its LCM. So your first step will be find its prime factors. So 980 can be written as your 22577. So it further can be written as 2 square 5 to the power 1 into 7 square. Similarly 540 को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं. This is your 2 square, this is your 3 cube into 5 to the power 1. और आपको स्टेप 2 बोल रहा है कि LCM is the product of highest powers of all the factors. It means अगर आप दो नंबर को अगर आप कंसीडर करते हो, यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 भी आ रहा है. So we have to consider only the highest powers of all the factor. It means आपको 2 का हाईएस्ट पावर लेना है, तो फिर इस रो में आपका 2 स्क्वायर आ रहा है और ये वाला रो पे भी आपका 2 स्क्वायर आ रहा है. सो सिंपली यू हैव टू राइट 2 स्क्वायर. सिमिलरली 3 वाला टर्म ये पहले रो में है नहीं और ये सेकेंड वाला रो में 3 क्यूब है. सो वी हैव टू राइट योर 3 क्यूब. सिमिलरली इन योर फर्स्ट रो दिस इज योर 5 टू द पावर 1, इन योर सेकेंड रो 5 टू द पावर 1. सो आपको 5 टू द पावर 1 लिखना होगा. सिमिलरली इन योर फर्स्ट रो दिस इज योर 7 स्क्वायर और 7 का कुछ टर्म आपका सेकेंड रो में है नहीं. सो सिंपली यू हैव टू राइट दिस इज योर 7 स्क्वायर. So multiply all the numbers, whatever the number you are getting, that is your required answer. Then next method is your common division method, और डे टू डे लाइफ में हम इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं. So in your step 1, write the given numbers in a row separated by comma. Then in step 2, divide the numbers by a common prime number. Then in step 3, in case the number is not properly divisible, we should write the same number in the following column. Then in step 4, we should stop dividing after reaching the prime number. Then in step 5, the product of common and uncommon prime factor is the LCM of given numbers. So let's take an example. Find the LCM of 24, 36 and 48 in common division method. तो आपको जो भी नंबर दिया गया है, simply you have to write in a single row separated by a comma. और हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो मैक्सिमम नंबर के साथ डिविजिबल होना चाहिए. यू कैन सी हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप ले सकते हैं. सो आई हैव टेकन योर 2. सो 2 12s are 24, 2 into 18 is 36, 2 into 24 is 48. सिमिलरली ये तीनों नंबर आपका 3 से डिविजिबल होता है. सो दिस इज 3 4s are 12, 3 into 6 18, 3 into 8 24. सिमिलरली ये तीनों आपका 2 से डिविजिबल होता है. 2 into 2 दिस इज 4,
2 3 6, 2 into 4 8. सिमिलरली दिस इज 2 3 4. और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों के साथ डिविजिबल होता है एक्सेप्ट 1. लेकिन हमें मिनिमाइज करने के लिए मैं यहाँ पे एक 2 ले लिया, and this 2 is divisible by 2 and 4. 2 into 1 is a 2, 2 into 2 is a 4. और 3 आपका 2 के साथ डिविजिबल नहीं होता है. सो सिंपली जो भी नंबर यहाँ पे इस नंबर के साथ डिविजिबल नहीं होता है उसको आपको नीचे से कॉपी कर देना होता है. ठीक. सो राइट एज इट इज. देन अगेन 3, 1 था तो 1 रह गया. 3 into 1 is a 3. सो दिस इज अगेन 2. आप वैसे ही बस रहने दीजिए. Then consider 2, so this is your 1 1 1. So LCM is simply LCM is 2 into 3 into 2 2 3 2. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ 148 के आसपास आने वाला है. नेक्स्ट इज योर HCF. इट इज abbreviated as highest common factor. It is the greatest number which divide each of 2 or more number. Again, it is the greatest divisor of any 2 or more number that can equally or completely divide the given number. और इस HCF को कुछ किताब में GCD बोल के मेंशन हुआ है और कुछ किताब में GCM बोल के भी मेंशन हुआ है. GCD means this is your greatest common divisor and GCM means your greatest common measure. So in order to calculate this HCF, usually we are following two methods. First is your prime factorization method, second is your division method. So in your prime factorization method, your step 1 will be write each number as a product of its prime factor. हम LCM में जैसे करते थे यहाँ पे भी वो बोल रहा है कि उसी तरह प्राइम फैक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना होता है. Then in step 2, now list the common factors of both the number in case of 2 number, similarly for 3 number and more. आपको जितना भी नंबर दिए गए होंगे उसी हिसाब से आपको कॉमन फैक्टर लिखना होता है. देन इन स्टेप 3, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर इज द रिक्वायर्ड HCF. वो बोल रहा है कि जो भी कॉमन आता है आपका जितना भी नंबर आप कंसीडर किए हो, द मैक्सिमम कॉमन पैरामीटर इज योर रिक्वायर्ड HCF. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. फाइंड द HCF ऑफ 24 and 36. सो 24 का अगर आपको निकालना होता है HCF, सो 24 को हम ब्रेक कर सकते हैं आज 2 2 2 and 3, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज योर 2 क्यूब इंटू 3, और सिंपली 24 को हम 12 इंटू 2 करके भी लिख सकते हैं. अगेन 36 कैन बी रिटन एज योर 2 2 3 3. इट मीन्स योर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और दिस इज योर 12 इंटू 3. आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 आपके दोनों नंबर पे आ रहा है, which is the maximum one. So the required HCF will be your 12. और ये बोल रहा है कि the required HCF is your lower power of each common factor. So यहाँ पर 2 क्यूब आ रहा है, यहाँ पर 2 स्क्वायर आ रहा है. So simply इनमें से आपका जो लोअर पावर होता है 2 स्क्वायर, so 2 स्क्वायर को आप लिखोगे, और यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 स्क्वायर आ रहा है. सो सिंपली आप लोएस्ट पावर आपका 3 to the power 1 आता है, तो फिर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो. सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सो फाइंड द HCF ऑफ 36, 27 and 80. सिमिलरली आपको तीनों नंबर लिखना होता है. सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल नंबर्स. सो 36 can be written as your 2 square into 3 square. Similar 27, this is your simply 3 to the power 3, and 80 can be written as your 2 to the power 4 into 5. और आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी कॉमन नंबर है नहीं, तो इन दिस केस आपका HCF सिंपली 1. ओके. सो नेक्स्ट मूव टू डिवीजन मेथड. सो दिस इज योर स्टेप 1. So write the given number in horizontal manner in a sequence by separating them with comma. Then in step 2, find the smallest prime number which can divide the given number. It should exactly divide the given number. वहाँ पर क्या होता था ना LCM में, अगर कोई नंबर आपका exactly divisible नहीं होते थे हम उसको नीचे लिख देते थे.
यहां पर देखिए, अगर ये नंबर डिविजिबल नहीं होता था तो फिर बस हम इसको एकदम नीचे लिख देते थे, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि सिर्फ एग्जैक्टली डिविजिबल वाला नंबर चुनना है हमें। अगर नहीं होता है तो फिर बस वहीं से आपको ब्रेक कर देना होता है कैलकुलेशन। सो नेक्स्ट, step 3, now write the quotient. Then in step 4, repeat the process until you reach the stage where there is no common number left. अगर आपका कोई कॉमन नंबर नहीं बचता है तो फिर बस आपको छोड़ देना होता है। Then step 5, we'll get the common prime factors as a factor on the left hand side, divides all the number exactly. The product of this common prime factor is the HCF of given number. So let's take an example. So find the HCF of 24 and 36. So 24 and 36 को हम एक ही लाइन में लिखना होता है हमें। देन हमें एक ऐसा नंबर चुनना है which is exactly divisible by these two number. तो आप यहाँ पे 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, जैसे आपका मन करे। So I have taken here 2. So 2 into 12 is your 24. 2 into 18 is your 36. Similarly 3 into 4 is your 12. 3 into 6 is your 18. Again, these are 2 2s are 4, 2 3s are 6. और देखोगे कि आप 2 3 को अगर आप तोड़ना चाहोगे तो सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई 1, अदरवाइज हम इसको नहीं तोड़ सकते। सो ये बोल रहा है कि सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर है आपको सिर्फ उतना ही मल्टीप्लाई करना होगा। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द HCF, so the required HCF is your 2 3 and 2. 2 3 is 6 into 2, this is your 12. So 12 is the required answer. So let's take one more example. So find out the HCF of 30, 45 and 75. तो फिर आप पहले इसको एक ही लाइन में बस आप लिख लीजिए। तो फिर हमें एक ऐसा नंबर चुनना है which is the maximum number that to be divisible by or which is divisible by all the 3 numbers. तो फिर हम यहाँ पे 15 ले लिए। So 15 into 2 is your 30, 15 into 3 is your 45, 15 into 5 is your 75. So required HCF आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर आ रहा है सिर्फ वही नंबर आपका HCF होगा। मूव टू नेक्स्ट सेशन। हाँ, और ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम में इसी कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन आता है। सो LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे ना। स्टेप 1, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट टर्म एंड कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन। ये आपको बोल रहा है कि कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया रहेगा, लेट्स से 4/6, पहले आपको क्या करना होगा ना, इसका लोएस्ट टर्म कैलकुलेट करना होगा। दिस इज योर 2, अगर इसको तोड़ेंगे तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, so it can furtherly converted as 2/3। अगर भी आपको कहीं मिक्स फ्रैक्शन गिवन होगा, लेट्स से 2 to the power 2/3, तो भी हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। दिस इज योर 3 into 2 6 plus 2 8, so 8/3। दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो स्टेप 2 क्या होगा, जब आप HCF कैलकुलेट कर रहे होंगे, सो HCF ऑफ द फ्रैक्शन is your HCF of the numerator and HCF of the denominator. Usually the upper part is your numerator and the lower part is your denominator. So simply, in order to calculate your LCM, you have to follow a certain formula. This is your LCM of numerator and HCF of denominator. It means HCF जब आप कैलकुलेट करते हो तो ऊपर वाला हिस्सा का सिर्फ HCF कैलकुलेट करोगे और नीचे वाले का LCM करोगे। अगर आप LCM अगर कैलकुलेट करते हो तो ऊपर वाला हिस्से का LCM, नीचे वाले का HCF. It means it is associated with the upper part only. Let's take an example. So evaluate LCM and HCF of 4/5 and 6/14. So in order to solve this one, पहले हमें इसे reduce करना होगा. So on reducing the fraction, the numbers will be 4/5. You can write as it is. But this 6/14 can be reduced as 2 3s are 6, 2 7s are 14. So it can be written as 3/7. So LCM will be your LCM of 4 and 3 upon HCF of 5 and 7. So
LCM of 4 and 3 will be your 12. As these two numbers are prime numbers, तो हमें simply multiply करना होगा। और इस HCF जब आप फाइंड आउट करते हो, अगर आपका प्राइम फैक्टर्स रहता है तो मतलब ये तो 5 and 7 दिस टू आर योर प्राइम नंबर्स, तो फिर इसका HCF आपका सिंपली 1 ही आएगा। सो LCM विल बी योर 12. Similarly, in order to calculate HCF, you have to calculate the HCF of the numerator 4 and 3 upon LCM of 5 and 7. So HCF will be your 1, LCM will be your 35. Simply you have to multiply. So your required HCF is your 1 upon 35. Let's take one more example. Evaluate the HCF of 8 upon 21, 12 upon 35 and 32 upon 7. यहाँ पे सिर्फ HCF मांग रहा है। So in order to calculate HCF of fraction, so the HCF of only numerators upon LCM of only denominators. So HCF equal to HCF of 8, 12 and 32 upon LCM of 21, 35 and 7. अगर आप इसका LCM निकालोगे तो 4 2s are 8, 4 3s are 12 and 4 into 8 is your 32. So simply HCF will be your 4, and in order to calculate your LCM, 21, 35 and 7. So this is your 7, which is the common factor of all the terms. So this is your 7 into 3 21, 7 into 5 35, 7 into 1 is your 7. So the required LCM will be your 105. So HCF of the fraction is your HCF of the numerators upon LCM of the denominator, which is your 105. So the required answer is your 4 upon 105. Move to next. So आपको ये जो 10 पॉइंट अगर आप याद रख लिए तो फिर बस पूरा आपका LCM HCF पे आप मास्टर बन जाओगे. So your first point is your, for any two given numbers, LCM into HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. इस पॉइंट से हमेशा आपका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. ठीक. सो इन योर सेकेंड पॉइंट इट इज मेंशन दैट इफ वन नंबर इज ए फैक्टर ऑफ अनदर नंबर देन देयर HCF इज द स्मॉलर नंबर. इट मीन्स अगर आपका दो नंबर अगर गिवन है 8 and 16 and 8 is a factor of your 16, so HCF will be your smaller number. Then your third point, HCF of co-prime numbers is always 1. Then fourth point, LCM of co-prime number is the product of the number. अगर आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा to find the greatest number that will divide P, Q, R, then the required number will be the HCF of these three numbers. Then sixth point, HCF of given number always divides its LCM. Then HCF of any two or more number is never greater than any of the given number. Then eighth point, to find the greatest number that will divide PQR and leaving remainder ABC respectively, then your required number will be your HCF of P minus A, Q minus B and R minus C. The ninth point, LCM of fraction, either a fraction or an integer, but HCF of a fraction is always a fraction. Then last point, if a set of numbers including fractions as well as whole number, treat the whole number as fraction by adding 1 in the denominator. अगर आपको कुछ ऐसा सीरीज अगर मिल गया जिसमें कुछ होल नंबर्स होंगे और कुछ फ्रैक्शन भी होंगे, तो फिर पहले आप होल नंबर को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे. Move to next slide. Let's do some question. So in your first question it is mentioned that greatest common divisor of two number is 8 while their LCM is 144 and one number is 16, then find another number. ये आपको बोल रहा है कि दो नंबर है जिनका HCF is your 8. Similarly LCM is your 144. अगर एक नंबर आपका 16 है देन व्हाट विल बी योर नेक्स्ट नंबर. तो जैसे हम
ये पहले पॉइंट में पढ़े थे, फॉर एनी टू गिवन नंबर LCM into HCF equal to first number into second number. So simply you have to apply here. So LCM into HCF equal to product of these two number. It means this is your first number is your 16. Let's say second number is your X. So your X can be calculated as 8 into 2 16, again 2. So your X equal to 72. So option B is the right answer. Okay. So move to next question. So the LCM of two number is 138, but their GCD is 23. The numbers are in the ratio of 1:6. So which is the largest number among the two? So let's consider a common factor k. So as per your question, आपका जो दो नंबर आ रहा है, this is your k and 6k. So as per your question, LCM of two number is your 138 and HCF is your 23. It means k into 6k equal to 138 into 23. This k will be multiplied and it will result k square equal to 138 upon 23 upon 6. So again this will be your 23. So k square equal to 23 square. So here k will be 23. So option D will be right answer. Then your question number 3. The LCM of two number is 168 and the highest common factor HCF is 12. If the difference between the number is 60, what is the sum of the numbers? ये आपको बोल रहा है कि your LCM equal to 168 and your HCF will be your 12. Let's say two number is your x minus y. Let's say two number is your x and y, and in your question it is mentioned that the difference between the number is 60. It means x minus y equal to 60. So what is the sum of the number? So your objective is to calculate x plus y. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जैसे आप ये जो LCM और HCF से आप पता कर सकते हो, your x into y will be your 12 into 168. तो फिर यहां से आप आइदर x को कैलकुलेट करोगे, इट मींस दिस 12 into 168 अपॉन y, और ये वैल्यू को आप इस इक्वेशन में लेके पुट कर सकते हो, या तो और एक बस फॉर्मूला है आपके, दिस इज योर x plus y whole square is your a square minus b square equal to 4xy. Again this term equal to 4xy plus x minus y square. So 4xy की जगह हम लिख सकते हैं 4 into 12 into 168 plus x minus y is your 60. So it can be written as your 60 square. So ये आपका आ रहा है कुछ 8064. आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो फिर यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं योर x प्लस y इक्वल टू 108. सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म. 108 means your option A will be the right answer. Move to next question. So the LCM of three number is your 720 and their HCF is 3.
If the first and second number are 15 and 36 respectively, find the third number. तो फिर इस केस में क्या होगा ना, आप देखिए, योर एलसीएम इज 720. हाँ, सबसे पहला चीज ये है कि दिस इज योर एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स. ओके, इज 720 एंड एचसीएफ इज 3. तो जो भी बस आपका नंबर दिया जा रहा है, सो फर्स्ट नंबर 15, सेकेंड नंबर इज 36 और थर्ड नंबर हमें मालूम नहीं. लेट्स से आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए और ये आपको बोल रहा है कि योर एचसीएफ इज 3 मीन्स हमें यहाँ पे 3 लिखना है. सो दिस इज 3 इंटू 5 15. सो 3 12 आर 36 और सिंपली आप यहाँ पे x लिखोगे. सो योर एलसीएम इज 720 मीन्स 3 इंटू 5 इंटू 12 इंटू x इज योर 720. ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, आप इसको स्किप मत करिए. सो दिस इज योर 720. सो आप यहां से x को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. 720 अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 12, 60 हो गया आपका, 12 हो गया, 4 हो गया. इट मीन्स आप x के जगह आप 4 लिखोगे. देन 4 इंटू 3 इज योर 12. आपका थर्ड नंबर 12 होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऑप्शन में 12 है नहीं, तो आपको एक ऐसा नंबर चुनना है which is the product of 12. आप देखोगे 42 is not a product, 45 is not a product, but 48 is a product. So answer is your 48. ऐसे क्वेश्चन बहुत बार मैं देखा हूं. ठीक. So move to next question. So question number 5. 3 numbers are in the ratio 3:4:5 and their LCM is 2400. So you have to calculate its HCF. So numbers are your 3, 4, 5 means 3:4:5 means your numbers will be your 3x, 4x and 5x and its LCM is 2400. इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझिए कॉन्सेप्ट को. तो हम अगर ये 3x, 4x और 5x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आ रहा है दिस इज योर 2400. आप ये x को x के साथ मल्टीप्लाई मत करिए, सिंपली नंबर को मल्टीप्लाई करिए और आपको सिर्फ x को ऐड कर देना होता है. सो दिस इज योर 4 इंटू 3 12 इंटू 5, दिस इज योर 60 इंटू x इक्वल टू 2400. ये तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका. आप ये नहीं बोलोगे कि सर यहाँ पे तो x क्यों होना चाहिए था, आप ऐसा क्यों किए. ये बस तरीका होता है. 0 0 विल बी कैंसल्ड आउट. 6 इंटू 4 24 40. So your HCF will be 40. अगर आपको समझ में नहीं आया, आप बस दोबारा देखिए इसको. The 3 numbers are in the ratio 3:4:5. So let's take its HCF as x. So the numbers can be written as 3 into x, 4 into x, 5 into x. Again in your question it is mentioned that your LCM is 2400. तो आपको कैसे लिखना है. So the अगर आप नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो देन आपका LCM आ जाएगा. सो सिंपली यू कैन कैलकुलेट द LCM. सो द आंसर इज योर 40. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्केल दैट कैन मेजर एग्जैक्टली 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लेंथ इज. ऑप्शन A, B, C, D करके ऐसे कुछ गिवन है. आप देखना कि दिस इज योर 30, दिस इज योर 90, दिस इज योर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर मीन्स आई कैन राइट इट एज 120 सेंटीमीटर एंड इट ऑल्सो कैन बी रिटन एज योर 135 सेंटीमीटर. और क्वेश्चन में लिखा है कि द ग्रेटेस्ट लेंथ. ओके, सो अगर आप देखोगे कि 5, आपका 5 भी हर एक नंबर के साथ डिविजिबल होगा. इट मीन्स 5 6 आर 30. ओके, सो 5 इज ऑल्सो डिविजिबल. अगर आप देखोगे कि 15 भी आपका डिविजिबल हो रहे हैं.
So this is your 15 into 2 30, 15 into 6 90, 15 into 8 120 and 15 into 9 is your 135. So 15 is also divisible by all the four number. लेकिन आपको क्वेश्चन में given a greatest length, so 15 is larger than 5 means answer is your option B, 15 centimeter. So next is your question number 7. 3 birds fly along the circumference of a jungle. They complete one round in 27 minutes, 45 minutes and 63 minutes respectively. Since they start together, when will they meet again at the starting position? ये आपको बोल रहा है कि जब से वो लोग शुरू किए हैं दोबारा वो कितने टाइम के बाद मिल सकते हैं. So in your question it is given that 27 minutes, 45 minutes and 63 minutes. तो फिर इस केस में क्या होगा ना, सिंपली द LCM ऑफ दिस थ्री नंबर इज योर रिक्वायर्ड आंसर. तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे 27, 45 एंड 63. और ये सारे के सारे नंबर आपका 3 से भी मल्टीप्लाई होते हैं और 9 से भी आप लिख सकते हो इसको. 9 into 3 is your 27, 9 into 5 is your 45, 9 into 7 is your 63. So required LCM equal to 9 into 3 27 into 5 into 7 is your 35. So it come around 9:45 minutes. It means your option A is your correct answer. Then move to question number 8. So 5 clocks ring automatically at interval of 12 minutes, 8 minutes, 3 minutes, 4 minutes and 10 minutes respectively. In 8 hours from the moment they start, how many times will they ring together? ये आपको पूछ रहा है कि 8 घंटे में ये पांचों क्लॉक 8 टाइम कितना बार बज सकते हैं. ठीक, तो आप देख सकते हो. सो द नंबर गिवन इज योर 12, 8, 3, 4 एंड 10. अगर आप देखोगे कि 3 is also divisible by 12, 4 is also divisible by 12, so we can ignore these two terms. Simply हम consider करेंगे 12, 8 and 10. और ये तीनों का क्या करना होगा ना, हमें LCM निकालना होगा. This is your 2, 6 are 12, 2 4s are 8, 2 5 are 10. Again 6 and 4 is divisible by 2. So let's take one more 2. 2 into 3 is your 6, 2 into 2 is your 4 and 5 is not divisible by 2 means simply write as it is. And your LCM will be 2 into 2, this is your 4, 3 into 2, this is 6 into 5, 30. So LCM is your 120 minute और आपका 120 मिनट इज योर 2 आवर. ये बोल रहा है कि हर 2 घंटे में एक साथ सब मिलके बजेंगे. इट मीन्स इन योर 8 आवर आपका 2 into 4 इज योर 8 आवर, तो 4 बार ये बज सकता है. सो व्हाट लिस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 48 एंड 36 leaves the remainder 13, 41 and 29 respectively. So in this case you have to calculate the LCM of 20, 48 and 36. हम यहाँ से कुछ अगर 4 लेंगे तो जैसे 4 into 5 20, 4 into 12 48, 4 into 9 36 और यहाँ से आप 3 ले सकते हो. 5 को वैसे ही रहने दीजिए. 3 into 4 12, 3 3s are 9. So simply आप LCM अगर आप कैलकुलेट करोगे, so this is your 4 into 3 into 5 into 4 into 3, तो ये आपका कुछ 720 के आसपास आएंगे. और आप देख सकते हो 20 केस में आपका 13 आ रहा है, 48 केस में 41 आ रहा है, 36 केस में आपका 29 आ रहा है. इट मीन्स 20 minus 13 is your 7, 48 minus 41 is your 7,
Similarly, 36 minus 29 is also your 7. So, least number will be your 720 minus 7, that is your 713. ये आपका एसएससी एग्जाम में एक बार आया था, तो आप इसको थोड़ा सा फोकस कर सकते हो अच्छे से. So your required answer is your option B, 713. Then move to next question. So the length and breadth of a rectangular floor are 16.25 meter and 12.25 meter respectively. So find how many minimum number of square tile would be required to cover it completely. ये भी एक बेहतरीन सवाल है. आप देखिए, ये बोल रहा है कि एक वॉल का दो साइड आपको गिवन है और दोनों साइड आपका मीटर में गिवन है. सो इट कैन बी रिटन एज योर 1625 सेंटीमीटर. मान लीजिए ये हिस्सा आपका 1625 सेंटीमीटर और ये वाला हिस्सा आपका आ रहा है 1275 सेंटीमीटर. और यहां पर देखिए, आप सिर्फ स्क्वायर टाइल सिर्फ बस मेंशन कर दिया, लेकिन इसका कोई साइज आपको मेंशन नहीं है. सो इन दिस केस आपको क्या करना होगा ना, 1625 और ये 1275 का पहले आपको HCF फाइंड आउट करने होंगे. सो इट्स HCF विल बी योर 25. आज योर HCF विल बी 25 और स्क्वायर टाइल आपका आ रहा है 25 मीन्स इसका जो एरिया आएगा 25 इंटू 25. सो द एरिया ऑफ द टाइल इक्वल टू 25 इंटू 25. और आपको ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स. सो द नंबर ऑफ टाइल्स विल बी योर 1275 सेंटीमीटर इंटू दिस इज योर 1625 सेंटीमीटर अपॉन 25 इंटू 25. तो आप यहां पे देख सकते, दिस इज योर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. नीचे भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. सिंपली जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ 3315 आएगा. सो योर ऑप्शन बी इज द रिक्वायर्ड आंसर. होप आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे. इफ यू लाइक माई वीडियो, if you like the content, then please like my video. If possible, please subscribe my channel and share among your friend. आपका जो भी बस सवाल आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. I will definitely reply to your query. So thank you so much. Thank you for watching. This is MOHAN Kumar signing off. Jai Jagannath.